Hey, hello all. This is Charvak Lokat or ex Hindu atheist or call whatever you like, but certainly not a Hindu and certainly not a dharmic kind of guy or neither a religious or that sort of person. I'm anti religion, so basically that's what you can say. Uh, I welcome you all in today's live. Last week we discussed on certain issues, including Israel, Palestine. I did cover some of the details, and we had somebody ex-Muslim random viewer come and speak here. Today's topic will be about child marriage in India, and basically, it's a shame for India that even after 75 plus years, we haven't been able to eradicate this social evil. It's a kind of shame, and that's what we need to discuss here. So basically, we need to discuss about child marriage in India, and child marriage in India is quite a big problem. Despite there is anti-child marriage law, despite the child marriage being banned, and despite the fact that we are living in 21st century, which is expected to be like sort of global enlightenment or blah blah blah, as you like to think. So, despite all these things, child marriage is a persistent problem, and while there has been a greater amount of decline in child marriages and there has been improved facility in terms of healthcare system and education, where are we really lacking behind? I mean, what's still continuing to drive these factors, child marriage, etc., which we are not supposed to see in 21st century? देखिए, हम 21वीं सदी में आ गए और हम आज भी चाइल्ड मैरिज पे मतलब चर्चा कर रहे हैं। ये कितने बड़े शर्म की बात है। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन हम अभी तक इस इविल को अभी तक सोशल इविल को जड़ से नहीं उखाड़ पाए। अभी भी है और अभी भी बहुत सारे स्टेट में ये चलता है। तो ये बड़े मतलब शर्म की बात है। आज को हमको इसी मुद्दे पे डिस्कस करना है। कोई बड़ा यूट्यूबर, उसके पास भले ही वो चाहे तो कर सकता है, ऐसे मुद्दे उठा करके एक अच्छा डिस्कशन कर सकता है, इसका समाधान दे सकता है, सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन नहीं, उनको वो मुद्दे चाहिए ही नहीं। उनको मुद्दे चाहिए भाई भड़काऊ मुद्दे, इमोशनल मुद्दे, मतलब वो मुद्दे जिससे किसी एक ग्रुप का एक इमोशन जुड़ा हुआ है। मतलब राम है, मंदिर है, तो भाई एक ग्रुप का इमोशन है, ग्रुप इमोशन। इंडिविजुअल इमोशन पे कभी चर्चा नहीं होगी, लेकिन ग्रुप इमोशन पे चर्चा होगी। भाई भाई हमारे समुदाय का सेंटिमेंट है। इंडिविजुअल सेंटिमेंट क्या है, जरा इनसे पूछिए, वो नहीं बता पाएंगे। एक इंडिविजुअल में जो गुण होते हैं, उसमें से ग्रुप का पार्ट होना बस एक गुण है, उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वालिटीज है, तो उस पर कभी चर्चा होती नहीं। इंडिया में हमारे जो पढ़े लिखे वर्ग है, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपने आप को बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं आजकल अपने आप को, ठीक है, जो मोस्टली राइट विंग है और बहुत सारे ऐसे लेफ्ट विंग भी, तो वो कभी ये मुद्दे नहीं उठाते। कभी वो जो है मतलब इस पे बात नहीं करते समस्या है और समाधान क्या है। चर्चा ये होती है कि भाई नहीं भाई, हमको मुद्दे भटकाने हैं, हमको कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे भटकाना है, हमको मंदिर मस्जिद करना है। मस्जिद बना लिया, मंदिर बना लिया, ठीक है, क्या हो गया? समाज में जो कुरीतियां है वो खत्म हो गई? भाई मैक्सिमम कुरीतियां तो जो सो कॉल्ड रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होता है, वहीं पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी होती है कुरीतियां। आजकल तो बहुत सारे पंडित और गुरु पकड़े जाते हैं मंदिर से रेप के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। ये हमारे देश की सच्चाई है। लेकिन हमको नहीं, हमको मंदिर बनाना है, हमको राम मंदिर बनाना है, हमको विश्वनाथ का मंदिर बनाना है, हमको वो मस्जिद बनाना है, पता नहीं क्या बनाना है। बस लोगों में यही बहस है। बहस किन मुद्दे पे होना चाहिए? हमारा मुद्दा क्या है? इकोनॉमिक भी मुद्दा है, जातिवाद का मुद्दा है,
हमारा मुद्दा है ये जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ठीक है। फिर आपका क्या बोलते हैं, डायन के नाम पे लोगों को मारना, विच हंटिंग, ठीक है। ये सब जो मतलब चीजें हैं, आपका उस पे मुद्दे बात होने चाहिए। लेकिन आपको क्या बताया जाएगा, नहीं भाई हम लव जिहाद पे बात करेंगे, हम लैंड जिहाद पे बात करेंगे, हम इस पे बात करेंगे कि यहूदी जो है वो यादव के वंशज थे कि नहीं थे। अरे क्या मतलब है भाई, यादव गए थे नहीं मतलब थे, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है मेरे को बताइए, क्या फर्क पड़ता है उससे। आप बोल रहे हो कि यादव जो है वो यहूदी बन गए, कितने यहूदी ने बोला कि वो यादव के वंशज है? कोई यहूदी नहीं है दुनिया का जो है बोलता है कि हम इंडिया से आए हैं। सबके सब मानते हैं कि भाई हम अब्राहम के बच्चे हैं भाई, उनका जो किताब में लिखा है वही मानते हैं वो। तो क्या बकवास वाली बातें चर्चा हो रही है टीवी न्यूज चैनलों वगैरह में। हाँ, ये तो ये क्या मुद्दे पे चर्चा हो रही है? हाँ, हमारे मुद्दा क्या होना चाहिए? हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि भाई समाज से पाखंड कैसे खत्म हो। हमारे समाज से कुरीतियों को खत्म करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमको समाज में कुरीतियां बनाए रखना है विज्ञान के नाम पे। कैसे भाई, धार्मिक धर्म को विज्ञान से जोड़ दो और बोल दो कि भाई धर्म में जो कुरीतियां वो भी अच्छा है। मतलब जो लोग बोलते हैं धर्म में विज्ञान है, तो क्या वो ये भी मानेंगे कि धर्म के नाम पे बाल विवाह होता है, धर्म के नाम पे विधवा प्रथा होता है, धर्म के नाम पे दहेज प्रथा होता है, दहेज के लिए मारा जाता है, धर्म के नाम पे भ्रूण हत्याएं होती है, मतलब कन्या बालकों का हत्या होता है, धर्म के नाम पर ही होता है, जाति के नाम पर ही होता है। वो अपना जातिगत सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, वो बिरादरी का सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, तो वो बच्चों को मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर लेते हैं इलीगली, वो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग करके, सेक्स डिटर्मिनेशन, हालांकि वो बैंड है लेकिन फिर भी होता है इलीगली। 1947 से लेकर अब तक हमने 5 करोड़ लड़कियों का हमने, जो बच्चियां हैं और जो भ्रूण है उनका हमने हत्या किया है। ये तो वो सो कॉल्ड ऑफिशियल डेटा, अनऑफिशियल पता नहीं कितना है। ये हमारे देश का हाल है। हाँ, इन मुद्दे पे कभी चर्चा नहीं होगी कि इन चीजों को हम समाज से कैसे खत्म करें। अरे भाई, ये चीजें कोई एक्सक्लूसिवली हिंदू कम्युनिटी, एक्सक्लूसिवली कोई मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। ये मुद्दा सारे कम्युनिटी में बहुत हद तक पाया जाता है, अलग अलग में, किसी कम्युनिटी में ज्यादा तो किसी कम्युनिटी में कम। लेकिन किसी कम्युनिटी में ज्यादा है तो उसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि वो इशू सिर्फ उसी कम्युनिटी का है। उस कम्युनिटी का क्या कि जो उसके नेक्स्ट बेस्ट में आता है, भाई हमारे में थोड़ा ज्यादा है, उससे भले ही कम है लेकिन बाकियों से ज्यादा है, उन कम्युनिटी का क्या, जैसी ही समस्या है। तो हमको चाहिए कि हम ऐसे जनरल मुद्दे उठाएं। ये जनरल मुद्दे हैं भाई समाज के, इनका समाधान कैसे हो, हम शिक्षा को कैसे बेहतर बनाएं, ये मुद्दे कभी चर्चा में नहीं आते। बड़े यूट्यूबर के मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, उनको हजारों लोग लाइव में, लाइव स्ट्रीम में देख रहे होते हैं, एंगेज होते हैं, लेकिन कोई भी एक वीडियो, एक लाइव स्ट्रीम जो है ऐसे मुद्दे पे कभी नहीं करेंगे। बड़े बड़े मंत्रियों को भी आजकल यूट्यूब पे बुला लेते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर मंत्रियों का इंटरव्यू ले लेंगे, लेकिन इस बात पे कभी इंटरव्यू नहीं होगा कि भाई चाइल्ड मैरिज कैसे खत्म हुआ, ये जो छुआछूत है वो कब कैसे खत्म होगा, दहेज प्रथा कब खत्म होगा, आपका क्या बोलते हैं वो भ्रूण हत्याओं के नाम जो हो रहा है लड़कियों का, उसका कब खत्म होगा। ये सब चीजें कब समाज में खत्म होंगी। विच हंटिंग जो है, इस पे कब लोगों को जागृति आएगी, गांव में, बस्तियों में। इन पे कभी इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ, इंटरव्यू क्या होता है भाई, हाँ राम मंदिर आपका बना रहे, अच्छा बाबरी मस्जिद तोड़ा था तो वो कौन सा साल था, क्या था, हिंदू खतरे में है, और हिंदू जो 8th क्लास सिटीजन है, 8th क्लास सिटीजन है भाई। 8th क्लास सिटीजन इसलिए है क्योंकि भाई इंडिया में आपका बाल विवाह है, इंडिया में आपका दहेज प्रथा है, इंडिया में आपका क्या बोलते हैं वो भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, ठीक है। यहाँ पे विच हंटिंग होता है, यहाँ पे छुआछूत है, आज भी छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी।
हाँ, इसलिए हिंदू 8th क्लास सिटीजन है भाई। किसी ने लिखा था ना, कोई बड़ा बुद्धिजीवी, कि इंडिया इज हिंदूज आर 8th क्लास सिटीजन इन हिंदू राष्ट्र। हाँ भाई, इसीलिए है। हाँ भाई, हिंदू राष्ट्र का 8th क्लास सिटीजन हिंदू, यही रीजन है। इनको ही खत्म कर लो तो शायद हम 1st क्लास सिटीजन से भी अच्छे हो सकते हैं भाई। ठीक है। बहुत हद तक यही हाल मुस्लिम कम्युनिटी का भी यही है कि उसमें भी बाल विवाह है। उसमें भ्रूण हत्या होती है कि नहीं होती वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, बाल विवाह है उनमें भी। उनमें पॉलीगमी भी है। ठीक है, कि वो क्या बोलते हैं, निकाह हलाला करते हैं। ठीक है। हाँ, ये है कि अगर वो इन चीजों को मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले लाइव स्ट्रीम में बताया है। ठीक है। बेस्ट तरीका ये है कि अदर द मुस्लिम्स लीव इस्लाम, आप इस्लाम को छोड़ दीजिए। बेस्ट तरीका है। या फिर अगर आप इस्लाम मानते तो आप एक उस लेवल पे आइए जहां आप बोलते हैं बहाई है, सूफी है, अहमदिया है, उस लेवल पे आइए। ठीक है, जिस विच इज समवॉट मोर ओपन टू अदर आइडियाज, उस लेवल पे। लेकिन आप सुन्नीइज्म को या शियाइज्म को फॉलो कर रहे हैं, देवबंदीज्म को फॉलो कर रहे हैं, वहाबिज्म को फॉलो कर रहे हैं, देन देयर इज नो ऑप्शन। मैं पहले ही कह चुका हूं इस चीज पे। ठीक है। और रिफॉर्म कर सकते हैं तो कुछ, अगर आपको मोहम्मद का ही लाइफ इतना अच्छा लगता है तो भाई, मोहम्मद तो मर्चेंट था। सारे मुसलमान बिजनेसमैन क्यों नहीं बनते फिर? ये जरा इनसे पूछ लीजिए। खदीजा जो है बिजनेस वुमेन थी, सारे मुस्लिम महिलाएं बिजनेस वुमेन क्यों नहीं बनती भाई? मोहम्मद ने 25 साल की उम्र में शादी किया, मुसलमान मर्द 25 साल की उम्र में शादी क्यों नहीं करते? और वो भी अपने से बड़ी या अपने एज के सिमिलर लड़की से क्यों शादी नहीं करते? बच्चों से ही क्यों शादियां करते हैं? मुस्लिम स्कॉलरों से पूछे ना कि भाई, आयशा को मानते तो खदीजा को क्यों नहीं मानते? खदीजा में क्या कमी थी, मेरे को बताइए। पूछे ना कोई भी मुस्लिम स्कॉलर से, जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर ये तो मुस्लिम कम्युनिटी का अलग प्रॉब्लम है, लेकिन मैं समझता हूं अगर वो भी थोड़ा दिमाग लगाए और प्रोग्रेसिव सोचे तो वो भी चेंज कर सकते हैं। और मैं लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन उनके कम्युनिटी में चेंज आएगा, वो दे विल बी मोर प्रोग्रेसिव देन हिंदूज इन मेनी वेज। जिस दिन ये चेंज कर लिया कि भाई, मर्द जो है वो अपने उम्र से छोटी लड़की से शादी नहीं करेगा, बल्कि अपने बराबर की उम्र से शादी करेगा। मर्द भी बिजनेसमैन करेगा और औरतें भी जो है वो बिजनेसमैन बनेंगी, इंडिपेंडेंट। वो भी प्रॉपर्टी ओन करेंगे, बिजनेस करेंगे। जिस दिन ये एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आ गया भारत के मुस्लिम कम्युनिटी में कि हमको इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव बनना है, देन हिंदू जो है भाई, वो मतलब दे दे विल नॉट बी, दे विल बी शॉक्ड इन मेनी वेज। यार, ये हमसे कैसे इतने ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए, हम कैसे पीछे छूट गए। ये होना चाहिए था चेंज एक्चुअल में। बिना चेंज के ही आपने पार्टीशन कर दिया। हिंदू कम्युनिटी में रिफॉर्म नहीं हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन पार्टीशन हो गया भारत पाकिस्तान का। खैर, ये अलग टॉपिक है। आज हम चाइल्ड मैरिज पे आते हैं। चाइल्ड मैरिज के मैं कुछ न्यूज और रेफरेंसेस में दिखाना चाहता हूँ। और लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ये गांव गांव तक पहुंचाइए, शहरों तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाइए। अपने परिवार वालों को दिखाइए कि भाई, ये बाल विवाह कितना बड़ा सामाजिक धब्बा है हमारे समाज के लिए। पंडितों और मौलाना को देखना चाहिए जो बोलते हैं भाई बाल विवाह कर दो, छोटी उम्र में बच्ची की शादी कर देना। अरे, पढ़ा लिखा नहीं है बच्ची, पता नहीं होता उसका बॉडी क्या है, उसका शरीर क्या है, और आपने कर दिया शादी उसका, सिर्फ इसलिए कि भाई आपको कुछ आपके जो रिलेटिव है वो पैसे दे रहे हैं, या आपको लगता है कि हमारे लिए कोई इकोनॉमिक बोझ है। सरकार भी नालायक तरीके से बैठी हुई है कि सरकार ऐसा क्यों स्कीम नहीं बनाती कि जो जो परिवार मजबूर है बाल विवाह करने में, उनके बच्चों को वो या तो स्कॉलरशिप दे, या फ्री एजुकेशन दे, या कोई ऐसा स्कीम खोले कि भाई, ओके, आपका इतना सारा स्टूडेंट नेम है, ये परिवार है, इनमें ये चाहते हैं बाल विवाह कर रहे हैं, ये अप्लाई किए हैं ऑनलाइन में, या फिर ये लोग अप्लाई किए सरकारी नौकरियों, सरकारी मतलब दफ्तर में एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। और ऐसे लोगों का जैसे डेटा मिले, बोले कि हाँ भाई, ऐसे इतने सारे लोगों को हम जो है वो एक क्या बोलते हैं आपका, रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाएंगे हम।
परिवार वालों को एजुकेट करेंगे और बच्चों को भी एजुकेट करेंगे, ठीक है। फिर हम जो है उनको स्कूल में जाने का इंकरेजमेंट देंगे या फ्री हेल्थ केयर देंगे। कुछ तो ऐसा स्कीम बनाया जाए जिससे कम से कम ये तो हो कि जो पेरेंट है वो होपलेस ना हो जाए कि यार कम से कम मेरी बच्चियां मेरे ऊपर बोझ तो नहीं बनेगी, मैं शादी कर देता हूं, कम से कम ये तो नहीं होगा। और 99% जो भारत में शादियां होती है उसमें दहेज लिया जाता है भाई। एंड इन मोस्ट केसेस जो लड़की का फैमिली होता है उनके पास खुद के पैसे से वो दहेज नहीं लेते, वो उधार लेकर के दहेज लेते हैं, वो लोन लेकर के दहेज लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन के पैसे से वो कुछ चीज खरीदते हैं दामाद को देने के लिए दहेज के रूप में, खरीद लिया, लोन भर नहीं पाए, लड़की की शादी हो गई और बाप जो है वो रस्सी लटका के सुसाइड कर लिया। बहुत हद तक ऐसे ही केसेस होते हैं इंडिया में। अब ये जो है फार्मिंग कम्युनिटी में बहुत बार देखा गया, फार्मर सुसाइड में, कि लोन के चक्कर में ज्यादा सुसाइड होता है भारत में। तो ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमको ये सोचना है। और रिसेंटली जब कोविड पैंडेमिक आया था, कोविड पैंडेमिक के टाइम में बाल विवाह बढ़ गया था, देयर वाज अ स्पाइक। There was a spike in the number of instances of the child marriage during the COVID-19 pandemic and during the lockdown। लॉकडाउन के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ और मैं कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये सबके लिए, सबको देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं। तो लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये देखिएगा। So this is the data, and it is clearly suggested that there is at least 12 million. I mean, this is a rough estimate, but still 12 million children are married each year. Okay, and 84%. Okay, and these are 12 million marriages, folks. 12 million is like 1.2 crore marriages of children below 10 years. Below 10 years, children are below 10 years, and 84% of them are from the Hindu families. The rest you can imagine it comes from the Muslim family and maybe other Sikh or somebody else, maybe tribal or somebody else. Okay, so even if somebody media news channel wants to highlight child marriage, they will bother about only the rest 16%, while forgetting about the 84% from where this child marriage comes from. Even if media was to show this in terms of bigotry, that's the sad state we are in. And this should be the talking point of the prime time debate, where what is the government's job and government's policy towards eradicating these social evils. Not just central government even, but at the state level government, even at the level of panchayat, at the level of uh, magistrate. What is the ways in which this has been dealt with to eradicate this social evil? 84% जो है भाई, आउट ऑफ द 12 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 20 लाख में से जो 84% लोग हैं वो हिंदू परिवार से आते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो भाई बिलो 10 साल के होते हैं, 10 साल के छोटे बच्चे का शादी हो जाता है। ये जाके पूरा न्यूज चैनल पढ़िएगा, डेटा चेक कर लीजिए। और ये मेजोरिटी देखा गया है ट्राइबल और जो गरीब परिवार है उनमें भी ये चीज देखा गया है। बिकॉज एज आई टोल्ड कि
जो लड़की की फैमिली होती है वो लड़की को एक इकोनॉमिक बर्डन देखती है. दे डोंट वांट टू see it as an economic bone or economic benefit. They see it as an liability. Okay, so ये है, instead of seeing it as an asset they see it as an liability. And how do you get rid of this liability? You take another loan where you know that you can't pay back the loan, and you once you can't pay the loan, you either commit suicide or you become a bonded laborer or you get into a debt trap. That's how the shithole goes. This economic. There is no big YouTuber. You name Beer Bishops, you name Dhruv Rathi, you name Abhijit Chavda, you name uh, uh, what you say, Jaipur Dialogue, Neeraj. None of these channels will raise these issues. Yeah, Hindus are big sufferers, and Hindus are biggest sufferer because of child marriage, because of witch hunting, because of untouchability, because of what you say, because of uh, female infanticide, etc., etc. Yeah, that's why Hindu community is backward because of these reasons. Of course, other community, I'm not saying there are no issues. There are issues, but let's focus for now. What is the bigger matter here? Okay, let me show you another this thing link here. So as I said, during pandemic time, during lockdown time, there was a huge spike in the numbers of the child marriage. The child marriage numbers just went up. Okay, they didn't come down; they went up. Quite contrary. And what did our central government and the state government did? Virtually nothing. Virtually nothing. Yeah, they did nothing. So let me share this news. ये देख लीजिएगा. Child marriages are up in pandemic. Here's how India tries to stop them. Yeah, that's right. During pandemic, child marriages went up, statistically speaking, and it went up in various states. Karnataka was also one of the states. Apart from it, Rajasthan, Madhya Pradesh saw also bigger spikes there. Maharashtra saw another big spike in child marriage. So Maharashtra is called as the business hub of India, and in business hub of India, imagine the child marriages go up. How much of the economic reality does it reflect on the society? How much? That's another matter of debate here. And percentage wise, if you go by the sheer percentage, Jharkhand has the highest rate of child marriages, followed by Bihar and West Bengal. And that's true because there are uh, people with higher poverty and people who are tribals there who live there. Among them, it is known that child marriage is bound to be higher. That is true because उनके पास तो पैसा नहीं है. And as I told, in India, girl child is not seen as an economic asset, it's seen as an economic liability. And most tribals in say West Bengal, Bihar, Jharkhand, they marry off their child below the 18 years, and in many cases below 10 years. 84% of the marriages that happen in India, child marriage below 10 year. Okay, for below 10-year child marriage that happens among the Hindus. Okay, so this is reason because the Hindu scriptures support that. In scriptures it's clearly known that once a girl reaches puberty or if it's pre-puberty, marriage is valid. Prepubescent. You read Padma Puran, you read Manusmriti, you read Parashar Smriti, you will get that whatever I'm saying. Okay, so 84% of child marriage below the 10 years of age happens among the Hindu families mainly.
But media would like you to show only towards the rest 16%. Why? Because they're most probably not Hindu, and it's easier to polarize the population out of emotion, while forgetting the bigger elephant in the room here. Pandemic, when child marriages are going up, what were the state government policies? During the same pandemic, Karnataka saw the highest in the year 2022. Karnataka contributed around two-thirds of the India's child marriage. Statistically, Karnataka alone in 2020, and that's a fact. What did the government do then? गवर्नमेंट कर्नाटक की सरकार ने उस टाइम पे क्या किया था भाई? उस टाइम पे सेंटर में बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, बम्बई, क्या किया उन्होंने? हम्म इस चीज को रोकने के लिए कर्नाटका में टू थर्ड चाइल्ड मैरिज यहीं से हुआ, कर्नाटका से। तो ओके, लेट मी शेयर मोर हियर। So, as I said, poverty is one of the main reason, but apart from poverty, there are other reasons. Apart from poverty, you can call religion, tradition, uh, tribal background, okay, uh, lack of infrastructure, and lack of proper education and healthcare system. These are some other factors which contribute to the child marriage. What if we improved our freaking education, healthcare system? We focused on the basic uh, social services and prioritized uh, improving the economic quality of individual. Okay, what if we prioritize, give a higher priority to the improving of the economic lifestyles of each individual in India? We make a better economic policy for that. Okay, wouldn't this be a better way to deal with this problem rather than just doing sloganeering, etc., or government remaining silent, media house remaining silent on this issue? But here is the same thing, this article. Poverty is not the only reason behind child marriages in India, and poverty is just one of the main reasons, but apart from that there are other main reasons one needs to keep in mind here. Of course, all the links are there in the description of this live. One can look at the description, get all the link. They can verify for themselves. They don't. If they're happy, not happy, that's not my concern. But main problem is, where are the virtue signaling right wingers? Virtue signaling right wingers who point out the social evil from the Muslim community. Yeah, while agree, social evil is in the Muslim community, but we have ex-Muslim movement for that. Ex-Muslim movement is all about creating awareness among the Muslim community that Islam contributes a lot to their own misery. Better leave Islam. That's what ex-Muslim movement is all about. Okay. However, question is, uh, how many Hindutva or right-wing YouTube channel which has uh, millions of subscriber? And by the way, I include people like Akash Banerjee, Dhruvrati as well, for remaining silent on these issues. So where are these guys? उन पे कब बोलेंगे? चाइल्ड मैरिज पे, डाउरी पे, आपका क्या बोलते हैं, इन सब चीजों पे कब आप बोलोगे भाई? Where is the way forward? Okay, how do we end it? Yeah, someone may point and say that there is a decline in child marriage. Maybe compared to 20 years back, 30 years back, yeah, definitely one can say that, yeah, there is a decline. Of course, when you compare 20 years back, 30 years back, but shouldn't it be come out as a shame that we still couldn't get rid of it from our society? We are living in 2023 and we still haven't gotten rid of it. Shouldn't that come as a shame? That's my point. And what can we do that we accelerate ending these things? Okay,
That's what matters here. So let me share another news here. Okay. So yeah. By the way, people say Bengaluru, Mysuru is a tech hub. No, it's not a tech hub, it's a superstition hub. Let me remind you. In our neighboring state, Bengaluru and Mysuru are not the tech hubs. They're the superstition hub of India. Yeah. And that's why here is the reason. Child marriage is happening right in your under your nose. Yeah. So here is the article by Times of India. It says Karnataka tops country in child marriages, and this was back in 2020. Pandemic and lockdown. What did government do? Nothing. No government intervention. Yeah, but government was busy making anti-conversion law. They were busy making anti-hijab those laws, and they were busy making anti-cow slaughter bills. Yeah, that's what government was busy in. But government didn't have any priority towards this issue, child marriage. What do we do to reduce this? How can we create awareness in the rural areas and remote districts? Okay, how do we make people aware that girl child is not to be seen as an economic liability but is also an economic asset? How do we improve the economic life of people? No, that time government of Karnataka, that was not the priority. They had a very different priority, and most of that priority was to do with the Hindutva agenda, nothing else. Okay, no economic priority behind it. Yeah, there was also a boycott. This Muslim trader, blah blah blah. Yeah, that's what the government was busy in our neighboring state. They didn't bother to look at this issue and resolve it. Yeah. And by the way, Karnataka is not the only state. Distant second is West Bengal. West Bengal comes the next after Karnataka in terms of statistically significant number of child marriages. Then you have Telangana, Tamil Nadu. So question is, what is freaking wrong in the South India? Why there is, you know, child marriages happening here? What has gone wrong? Economically, socially, what explains these things? That needs to be a debate, prime time debate on the TV news channel. No, we have a prime time debate on who is the biggest contributor to the population rise and India becoming number one in population, whether it's Hindus or the Muslim. A debate is on whether we need to make temples free or not. Debate is on whether Pakistan's Imran Khan will come to power or not. More bothered about Pakistan when their own media doesn't give a damn shit about it. Okay, and then what else are they bothered about? Yeah, they are more bothered about this population control bill, etc., etc. And population control bill, by the way, we probably need it, but I don't think I would support the BJP version of it. I would rather support a more economic version of it. It needs to be economic and social version of it rather than a religious or ethno-religious version of it. Yeah, that's what I'm looking for here if population control bill is being discussed. But leaving aside that, what else was being discussed? Oh yeah, whether we need to have UCC or not, or whether we need to have what else? Illegal Rohingya immigrants. That is a problem. Yeah, these were the things being discussed. Galwan, even Galwan clash was not discussed. China issue wasn't even raised by the media. Their full tilt and camera was towards Pakistan, while China was attacking on India. They didn't bother to do that. Yeah. So what should have been the prime time debate?
has been converted into a outside issue as an issue of non-matter, and instead you have something else. You're just selling the tamasha or some sort of puppetry jokes on the primetime debate, basically in the name of seriousness. Yeah, that's what is happening in India. So go check these articles out. References are there in the description where I have clearly mentioned these links, these uh, you know uh, uh, references and the description. Please go check it out. जाइए लिंक को चेक कीजिए, पढ़िए इनको कि हम 75 साल बाद भी हम पीछे क्यों हैं. चाइल्ड मैरिज 2005 में जो था वो 47% था. ओके, 2021 आते आते ये 23.3% हुआ. नो डाउट देर इज ए डिक्लाइन, ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, बट इज इट एनफ? जबकि 2023 आते आते ये खत्म हो जाना चाहिए था. बाय 2023 दिस शुड हैव बीन एन ऑब्सोलीट थिंग, चाइल्ड मैरिज. बट नो, 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 23.3% मैरिजेस आर चाइल्ड मैरिज. 23% मैरिज जो होते हैं भारत में वो चाइल्ड मैरिज होते हैं भाई, ये सच्चाई है. And you can be damn sure at least 70% of it are from the Hindu families. Close to 70%. You can be pretty damn sure about it. Though media will make you only highlight the issue from the rest 20% or 30% while ignoring the elephant in the room 70%, because that's how the stupid mafia runs here in our country. Okay, let me show you another here. Link here. As I told, in terms of percentage, Jharkhand top in terms of percentage. So girl child marriage high percent list, Jharkhand, West Bengal. Yeah, Jharkhand and West Bengal in terms of percentage. I mean, number of girl child marriage per 1,000 people or per 100 people is significantly high in states like Jharkhand and West Bengal than in any other states in India. In terms of number of marriages, okay, in terms of number of girl child marriage, Karnataka topped, okay, in 2020. So this is a very recent data. Go check it out. झारखंड और वेस्ट बंगाल में जो है भाई, पश्चिम बंगाल में परसेंटेज या औसतन के माध्यम से देखा जाए तो भाई बाल विवाह जो है वह ज्यादा है भाई. लेकिन इस पे मीडिया डिबेट नहीं करेगा. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी अब शायद किसी को भी वोट कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी वोट कर ले, ठीक है. लेकिन सवाल यहाँ पे वही मुद्दे होते हैं कि जो सामाजिक जो इविल है, सोशल इविल, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, राजनीतिक दल कुछ नहीं करेगा, लेकिन पब्लिक क्या है? पब्लिक सोई हुई है कि पब्लिक जो है वो सोने का नाटक कर रही है? ये मेरा क्वेश्चन है. माफिया जो है, माफिया से मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ. माफिया जो है वो अपना काम कर रहा है, लोगों को लड़ाने का और देश में खून बहाने का काम कर रहा है बेसिकली. तो माफिया जो है वो तो भाई माफिया ही है विद अ क्रिमिनल मास्टरमाइंड, ठीक है. लेकिन सोशल इविल कैसे खत्म होगा समाज से? हमने ये तो बात कर लिया कि डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि भाई अब तक खत्म हो जाना चाहिए था. हम भारत, हमारा जो देश है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है. हम बोलते हैं ग्लोबल विलेज, एशियन एज, इंडियन एज, पता नहीं क्या क्या हम जो है वो फैंसी टर्म्स यूज करते हैं. लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है समाज में, जो हमारे आज की डे टू डे समाज हम देखते हैं, वहां पे ये चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती भाई.
इतना मतलब डिस्टेंस डिस्कॉर्डेंस क्यों है, इतना इतना डिफरेंस क्यों है रियलिटी में और जो चीज बताया जाता है मीडिया में दिखाने में, सॉरी माफिया में? क्या क्या क्यों है ये कभी सवाल पूछा है लोगों ने, पब्लिक ने? पब्लिक भी सवाल नहीं पूछता। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। कम से कम एटलीस्ट पब्लिक सवाल ही कर लेते तो शायद अच्छा होता, लेकिन नहीं, वो हमको वो सवाल नहीं करना है। हम जो है वो अ, कमल का बटन दबा देंगे, हाथ का बटन दबा देंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का चेला बन जाएंगे, हम उनका बटन दबा के आ जाएंगे, बस हो गया, हमारा काम हो गया, हम सवाल जवाब नहीं करेंगे भाई, मुंह बंद रखो। जबकि डेमोक्रेसी में लोगों का काम होता है, along with media, to question the power in authority। जो अथॉरिटी पावर में है उससे सवाल जवाब करना, उसकी आलोचना करना और उनके कमियों को हाईलाइट करना, ये मीडिया का काम है और ये पब्लिक का भी काम है। इमेजिन करिए अगर पब्लिक और मीडिया थोड़ा इस पर और जोर देती चाइल्ड मैरिज पे। आज हमारा चाइल्ड मैरिज 23% नहीं होता, 5% होता एट द मोस्ट, या 4%, विच इज ऑफकोर्स नॉट अ गुड थिंग बट स्टिल मच बेटर। और आगे चलते इन फ्यूचर वो शायद खत्म भी हो जाता अगर मीडिया इन मुद्दे पे ज्यादा जोर दिया होता तो, लेकिन नहीं। और यूट्यूबर, इमेजिन करिए आजकल यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, न्यूज मीडिया, इमेजिन ये एक साथ मिलकर के काम करते हैं, पब्लिक प्रेशर बनाते हैं, कितना अच्छा होता देश के लिए। चाइल्ड मैरिज को खत्म करना, अब तक खत्म हो जाता चाइल्ड मैरिज। लेकिन नहीं भाई, हम खत्म नहीं करेंगे, हम किसी बाबा जी को बुलाएंगे और बाबा जी बोलेगा चाइल्ड मैरिज बहुत अच्छा था, पुण्य का काम है, इससे पाप धुल जाता है बाप का। बाप को जो है अपनी बेटी की शादी जैसे ही उसका वो मतलब पीरियड शुरू हो जाए उस टाइम कर दो, या उससे पहले कर दो, नरक से बचना है तो। कोई बाबा को यूट्यूब में बिठा देंगे और बाबा ऐसे ही सजेशन देगा बाल विवाह करने का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये हाल है हमारे देश का। और ये ऐसे कोई यूट्यूबर नहीं कि वो अनपढ़ है गवार है, नहीं भाई, पढ़े लिखे यूट्यूबर है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे यूट्यूबर। ठीक है, वो आके कर रहा है। बट स्टिल देर आर सम पॉजिटिव्स, कुछ पॉजिटिव नोट भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ, ये डिक्लाइन अच्छी बात है कि चाइल्ड मैरिज इज कंटिन्यूइंग टू डिक्लाइन एंड it will decline further hopefully in the near future। and by the time मैं बूढ़ा हो जाऊं शायद ये इंडिया में खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। that's my just wish here। so go check this link out here, it will tell about the possible solutions to the child marriage, okay, and child marriage decline overall, okay, uh, from the past 20 years 30 years कितना ये decline कर गया है। So while that is a positive sign which we are hopefully moving towards, during a pandemic there was a spike, as I showed। pandemic और lockdown के time में ये बड़ा था, we should not forget that। ये बड़ा था और we should not forget that। okay, so hopefully uh, we see that this becomes a very obsolete thing, खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। मैं मेरा यही सोचना है, ये social evil, and we live in a much better society hopefully। okay, so what are the possible solutions to child marriage? One is rural awareness. Awareness in the rural areas is what is big time required. Rural areas, small towns, and various remote district, which are especially the tribal areas, where this significant amount of awareness and social campaigning by various groups is required। Kailash Satyarthi's foundation does a pretty good job in these areas, but there are other organizations which also does this. So that is number one, a social movement and public awareness in rural areas, remote districts, tribal areas. Okay, basically I mean to say areas which are more or less economically backward, or areas where
girl child is seen as a liability instead of an economic asset. Okay, so that is number one. Number two, uh, another thing that is very important is our schooling education system needs to improve. A proportion of the girl child versus the male child students, you just look at it, doesn't look really good thanks to the female feticide and female infanticide, because in states like Haryana and even in Uttarakhand, the sex ratio has gotten worse instead of getting better. Okay, so uh, I mean, what else to say? So the only thing is you can hope for a change in an educational system. New education policy is nothing but education policy for the privilege. Basically, eh, new education for privilege. That's what new education policy is. आपके पास पैसा है, आप लखपति हो, आप अपर मिडिल क्लास के हो, आप अमीर हो, आपको एजुकेशन मिलेगा. आप लोअर मिडिल क्लास के हो तो आपको लोन लेना पड़ेगा और लोन के चक्कर में तुम पीस के मर जाओगे. गरीब हो तो भाई सवाल ही मत पूछो. ठीक है. So basically that's how this government's economy is. Basically policy education, as I said, 16% of India's GDP should be in the education sector, quality education sector where there is more empowerment to women. And by the way, one, if you just focus on the education of the girl child, okay, if you allow the girl child to complete high school, you know, complete colleges or higher studies more and more in numbers, right? That is really helpful in terms of their household choices going ahead, because the tendency in highly educated girls who have completed high school or college or even degree is they prefer to have very small families, and they prefer to have one child or no child at all, which is actually good way to look at it. So that is number one priority: education of girl child from pre nursery to high school, mandatory. Make that education up to 12th is mandatory, and if somebody is not able to complete the education up to 12th, state will sponsor scholarship to complete it. Basically that's how you can look at it. Okay, that is number two. Number three, I would say improving in the healthcare facilities. Okay, so a lot of the times there is hardly any hospital or clinic in the villages or remote area. So government can build these clinics, smaller clinics with good and decent facilities. Okay, along with the expenses covered or subsidized healthcare, medicines, etc. That can help to an extent. Okay, that will help basically women and child. Okay, that is number three. Okay, number four, a track of loans being taken. I mean, if you look at the child marriage, it's also important to keep in mind there is something called as dowry, and for dowry, more often than not, the poorer families opt for money lending, or they take loan from the money lenders. तो वो जो है भाई पैसे लेते हैं, वो आपका क्या कहते हैं, लोन लेते हैं. लोन को तो भर नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं. तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ट्रैकिंग सिस्टम, कि ये पता चले कि कितना लोन लिया गया, कहाँ से लिया गया, और उससे एस्टिमेट करना इजी हो सकता है कि ये बच्चे का विवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, एंड जैसे हमको पता चले कि ये बिलो 18 ईयर या 15 ईयर या 10 ईयर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है शादी होने में, that marriage should be made as null and void. Basically, there is one loophole in this child marriage ban law. Okay, and that loophole is when child marriage do happen, there is no provision in the law that says this marriage will be considered as null and void, the child marriage. Okay, so I hope we have a law where it says these such marriages are null and void, to set an example. Okay, ये हो सकता है.
and involve social workers as part of rehabilitation centers who can work with the family of the girl child and explain them that the girl child need not be an economic liability, it can be an economic asset. Explain them. Most of them are not aware of today's world. So these are the some of the ways I have suggested and some of the policies you can check out in this link. कुछ ऐसे policies है इकोनॉमिक एंड द सोशल पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट किया जाए तो इसको कम किया जा सकता है चाइल्ड मैरिज को. तो ये लिंक को सबको जाके देखे, चेक करें, ठीक है. और लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाइल्ड मैरिज के इस इशू को. आप अपने परिवार वालों को दिखाइए, अपने गांव वालों को दिखाइए, अपने आस पड़ोस के लोगों को दिखाइए. आप जो है ये जो है आप कोई आपके परिवार का रिश्तेदार है या पड़ोसी है जिनमें ये चाइल्ड मैरिज इन्वॉल्व है तो आप उनको भी दिखाइए, ठीक है. कि भाई यू आर मैरिंग ए गर्ल एट एन एज वेयर उसका मेच्योरिटी ही नहीं होता है, पूरा मेच्योरिटी ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता है कि भाई ये फैमिली कैसे संभालना है, या फिर एजुकेशन और करियर क्या होता है, प्रोफेशन जॉब क्या होता है, ठीक है, बिजनेस कैसे सेटल करते हैं, फाइनेंस के बारे में उतना पता नहीं होता. तो ये चीजों पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है. और ये भी देखना चाहिए लड़के का उम्र क्या है. देर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए बॉय और ए मैन वर्सेस एज ऑफ ए गर्ल. मतलब बहुत सारे ऐसे बिलो 10 ईयर के लड़कियां होती है जिनकी शादियां 30-40 साल के मर्द से कर दिया जाता है. सोचिए कितनी शर्मनाक की बात है. And by the way, this is very common in countries like Pakistan. Okay. But of course, my focus will be on India. Let me stick with that. Okay. तो इंडिया में भी ये चीज होता है. और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में होता है, हिंदू कम्युनिटी में होता है, और ये हिंदू कम्युनिटी में ज्यादा होता है बेसिकली, ठीक है. डिसप्रोपोर्शनेट एज गैप बिटवीन द गर्ल चाइल्ड एंड द मेल गार्डियन. ओके, ये है एक जो हम देखते हैं. फिर हम एक और चीज जो देख सकते हैं वो है आपका आ, आ, मैं कहा था, वेयर वाज आई, या in many cases ill treatment, that the emotional sensitivity of a girl child who has not yet matured versus somebody who has already grown up and seen certain amount of world. तो ये जो एक इमोशनल गैप होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का, that never gets covered up even after over a period of time. That's again a problematic in these child marriages. These things are the ones that needs to be explained to the parents. And question is, even if suppose they're married, can the bride and groom live happily? What if the girl is raped or sexually assaulted? होता है बहुत बार sexual assault. क्या करेंगे तब आप तब क्या ये बोलेंगे कि भाई मेरे दामाद ने किया है, इसको झेल लो? She is a girl child. Her private part and genitalia wouldn't have developed that sort of sensitivity and maturity if somebody is to do sexual assault. तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हैं that really needs to be looked deeper, and why the child marriage is bad. And this is the message that needs to be conveyed about the possible problems with it for having child marriage. And another thing with child marriage is that uh, a lack of education. Girl child's dreams get crushed. They too have their own dreams, they too have their aspirations, they want to get a probably some sort of professional or career job, they want to get educated, they want to complete education, they have certain dreams. Those dreams get crushed overnight. So these are really the thing that needs to be thought about and needs to be told to the public about the outcomes of the child marriage or possible problems associated with it, and why
this child marriage is a social evil and the reason why it was banned. So yeah, do share this live and it reaches more people. So I hope I have done my presentation तो मैंने खत्म कर दिया है. अगर किसी को आके बताना है, कुछ बोलना है या डिबेट करना है या अपने थॉट्स रखने हैं, वो आए, लाइव जुड़े, शेयर करे मेरे साथ. ओके, हम बात को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. या if anyone wants to debate me, talk with me, or even wants to support my awareness campaign on this, they can join and talk. Okay, this is an important issue, let's not forget it. Okay, just like witch hunting is an important issue, female infanticide, feticide is an important issue, dowry and dowry deaths is an important issue, and killings and murder due to superstition that happens quite often in India is an important issue. Just like these are important, so is this one. Same is with untouchability. Untouchability, they say it has become reduced. Yeah, it has become reduced, but it should have become extinct by now. But something is keeping it persistent. Let's discuss that. That should be the topic when we talk about untouchability in India. So basically, I have shared the StreamYard link. If anyone wants to come and join, they're welcome to join. I've also put these links in the description reference. One can check it out. Yeah, if anyone wants to share this live, do share it. If live को खत्म कर दूंगा, ठीक है? Because nearly 1 hour has happened. तो मुझे ये live को खत्म करना होगा फिर. Okay. So remember that Sundays and Fridays are the days where I will be doing live regularly at 7 p.m. sharp. At 7 p.m. Sundays and Fridays are the days I will be doing live. So take your time out for joining and viewing my live. Okay. And I will be continuing awareness campaigns on these issues. Okay. So hopefully people will open their eyes and wake up and spread the word. Okay. So, okay, with this, I end my live. If nobody is joining and if nobody wants to talk or share their views or even debate me, okay, if they have any problem, my mail ID is there, lokayatacarvaka@gmail.com. One can send me an email. I also write blog post, so one can check out my blogs as well. Okay, that I continue to write. One second. Yeah. So let me share this one. Here is the where I write my blogs. So I have written so far two blogs, one on the paradox of Indian economy. We are fifth largest economy, yet why is it that fifth largest economy doesn't get reflected on the day-to-day ground reality, and what is the reason for that? I have covered that. Then I have covered the Indian foreign policy, that India is a part of BRICS and is considered as a representative of one of the global south. Okay. However, in recent times, over the last few years,
The foreign policy has tilted towards the global north with US and its imperialist allies, basically. Okay, and that has actually caused a big problem with our neighbor. Our neighbors don't identify with, the global north or imperialist allies of the global north. They don't. They identify more with rest of the global south, that includes the African countries, countries in Southeast Asia, Indonesia, even partly China, and etc., Vietnam. That's what they identify with. India doesn't identify. So that has actually kind of upset in many big ways. Okay. And another third thing that has been is the domestic uh, Muslim phobic. I wouldn't rather call it Islamophobic, I would rather call it Muslim phobic, where you are judged person by his Arabic or an Urdu or a Persian sounding name rather than by his own thought. One can call himself blah 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 with an Arabic or a Persian or a Urdu name, but if he doesn't believe in Allah or Islam, that's all right. I'm fully supportive of that. Okay, but if somebody believes that they are, having that sort of name and they believe in jihad, yeah, then it's a problem. But the problem in India is everybody is clubbed as jihad. Even those people who may have that name with Arabic or Persian sounding, but are not necessarily believers of Islam or who don't follow that religion particularly seriously, okay, or don't take it seriously. People that are still clubbed as jihadis and even attacked. So yeah, in India it's actually a Muslim phobic, where anybody who wears a skull cap, whose penis is circumcised, who wears that pajama, okay, who has a big mustache or goes to areas of masjid, or who has an Arabic or Persian sounding name, must be bad or must be evil. Basically, that's the kind of environment we have created without even bothering to investigate what do they really believe in. Person can have any looks. There are plenty of people even within Hindu community who will say I'm atheist, but I don't wear, but I wear this tilak, I wear this tika, I wear this bhagwa vastra, etc., etc. I wear kalava, etc., etc. There are plenty of Christians who will say that I go to church, but I'm agnostic when it comes to the existence of God. There are plenty of them. What if there are like that many in Muslim community? So the problem really is it Islamophobia or Muslim phobia? I would rather say it's Muslim phobia. Muslims are targeted as an ethnic group, not not necessarily because of their religious belief, not because of that, but for them being part of an ethnicity. It's an ethno-religious hatred. That's what we see here. Okay, so that's one reason why uh, neighbors like Maldives, Bangladesh have sort of been hesitant. Okay, so go check it out, and I've suggested solutions as well. If India is the fifth largest economy and if it considers itself to be a global power, why hasn't Indian government called for a ceasefire? Yeah, Indian government has given humanitarian aids, but why hasn't Indian government called for a ceasefire in Israel-Gaza conflict as of now? That needs to be looked at, right? Why can't India intervene in this issue like China, Russia, or US does? Like France does, UK does. Our economy is bigger than France and UK, yet on Israel-Palestine issue, France and UK intervene in a very active manner. India is not able to do it. Why can't India be the mediator to bring peace between these two countries, Palestine and Israel? They can do it, they don't. Prime Minister goes visits South Korea, Japan. Okay, if India wants, they can
act as a mediator between North Korea and South Korea and bring about a more better relation between those two countries. Okay, and maybe helpful, hopefully help in the reunification. Why can't India look forward to that? So there are a lot of loopholes, and I have suggested possible solutions for it. So go check out this blog spot as well. Okay. Okay, with this I end my live. Okay, thanks for joining and watching this live. Do share this live, comment, share, and hit the bell icon for notification if you haven't. Okay, bye.